बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुंदस खान, आप देख रहे हैं मुकदमा प्रॉपर्टी का। मेरे साथ हैं आमिर अली साहब, और आज हम बात करेंगे जो कॉन्स्टेंटली ये कहा जाता है, ज़्यादा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तो प्रॉपर्टी मार्केट, इकॉनमी के साथ साथ प्रॉपर्टी मार्केट भी गिर गई है। और इन देयर डिफेंस ये कहते हैं कि ग्लोबली ये फिनोमेना जो है ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में डिक्लाइन आया है। टोटली जो है वो आपकी ये सेक्टर जो है ये डाउनफॉल इसका आया, और इससे अटैच्ड फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। आज हमारे साथ होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। हमारे साथ हैं एहसान उल्लाह साहब, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं फ्रॉम कनाडा। हमारे साथ होंगे राज सिंक्लेयर साहब जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं फ्रॉम इंग्लैंड, राशिद अल आमरी फ्रॉम दुबई, अनिल कपूर फ्रॉम इंडिया एंड डॉक्टर क्रिस फ्रॉम अर्जेंटीना हमारे साथ होंगे। इन सब से हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्या ये ग्लोबली प्रॉपर्टी मार्केट जो है किस तरह चल रही है, क्या जो रिसेशन यहाँ पर आया है पाकिस्तान में क्या ग्लोबली आया है, और फिर क्या लिंक है हमारी कंट्री का उनके साथ, एंड हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर मेक दिस सेक्टर बेटर। आपसे आमिर साहब मैं स्टार्ट करूंगी, एंड आई विल आस्क यू वन ऑब्वियस क्वेश्चन जो आई थिंक सब इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम क्यों इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, उसका क्या लेना देना है हमारी लोकल प्रॉपर्टी मार्केट से। हम ये बातें तकरीबन जो है काफ़ी अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट मर गई, लोग तबाह हो गए, हालात बुरे हो गए। लेकिन एक बात ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी वजूहत क्या हैं। आज का शो शायद उनको ये समझने में मददगार होगा। हम आज बात कर रहे हैं उन तमाम तर इकोनॉमीज़ के साथ, उन तमाम तर मार्केट के साथ जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टी का बिजनेस। हमारे यहाँ बिजनेस अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ग्रे एरियाज़ में रहा है, जिसकी वजह से होता यह है कि बासानी वो तमाम तर माफिया आती है मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ जगह आके इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करते के वहाँ से अपने मकासद हासिल करती है और दूसरी मार्केट में स्विच हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली जो लोकल इन्वेस्टर होता है, स्टेक होल्डर होता है, वो मुतासिर होता है। लेकिन ये बात जब हम अपने पावर हब के साथ करते हैं, लोकल मार्केट स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं प्रॉपर्टी मार्केट अगर डॉक्यूमेंटेड हो गई तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे, हम टैक्सेस देंगे तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे। उनको ये बात, आज का ये शो उन तमाम नादानों के लिए हैं, उन तमाम से लोगों के लिए हैं कि भाई मार्केट सिर्फ एफएटीएफ के लिए स्ट्रक्चर नहीं हो रही, कि तुम्हारा बेनिफिट है इससे। अगर ये स्ट्रक्चर होगा, यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट, यू कैन जनरेट गुड क्वालिटी रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। सो दिस मेरे ख्याल में आज का शो उन तमाम के लिए मददगार है, और हम अपनी तमाम तर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, जो इस मार्केट का हिस्सा हैं, हम कहेंगे कि आज देखिए इसको तवज्जो के साथ समझिए और देखिए कि इन बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ आप और हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और आगे जाके आमिर साहब मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि किस तरह जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीबडी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा जो है वो नाजायज़ फ़ायदे भी जो है वो उठाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ इज़ दैट आई वुड लाइक टू आस्क राज सिंक्लेयर। हेलो राज, शुड आई से गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू योर टाइम, बिकॉज यू आर विद अस फ्रॉम इंग्लैंड। Good afternoon it is, right? Correct, yeah, good afternoon. Okay, Raj, welcome to the show. And the first question that I would like to ask you is, do you think that our local market is facing international recession? Do you think the recession is globally affecting all markets, or is it limited to few countries? I think possibly it's because it's not a bad recession like we had about 10, 12 years ago. In the UK, for example, it's not really affecting us at all. There are other factors that are affecting us. Of course, we're having an election quite soon, which is in about 4 weeks' time. That brings about uncertainty. We've got the Brexit, where we're leaving the EU maybe or maybe not. That's creating uncertainty. So locally in the UK, these are the type of things that are affecting the market more than anything particularly that's happening internationally. You know, we're lucky in the UK that the bank rate, the Bank of England base rate, is 0.75%, and locals like myself can get a mortgage, a residential mortgage, for under 2%. So it's very different to Pakistan, that's for sure. But internationally at the moment, it's not really affecting us that much, to be quite honest. So do you think, Raj, this is the right time to invest in UK? I think it is the right time to invest in the UK, because when there's uncertainty, and people are holding back, there are always investments and opportunities, no matter what the market is. I have an old saying, the wind blows the same way for everybody, it's how you set your sails. And with this uncertainty at the moment, it's a great time to buy.
Let me give an example. In London, one of our strongest markets, the actual property prices are dropping very slightly. And so if you want to buy in London, it's a very, very good time to buy. The yields are not particularly good in London because property is expensive. The average yield in London is just under 4%. But when you look maybe 150 miles north of London, you can get yields of up to 10%. It's quite surprising. So don't you think the Brexit is going to make it a little unfriendly for foreign investors to invest in your country? Not really. If you look at the English or the UK property market, it's very, very robust. You know, we have a long track record. We've got a land registry. We have good law and governance in this country. And let me give an example. Just before the last recession, or round about the last recession, the average property price was £155,000. And now it's about 235. So it's gained about 50% in the last decade. So it's quite a steady rise. Raj, in which area? In which area? This is across the country as an average. Okay. You're seeing great capital growth, for example, in the East Midlands near Birmingham, Manchester, this type of area, and Nottingham, all of which is about 100 to 200 miles further north than London. Some very, very good capital growths. And they're compelling. By the way, Raj, which area is good to invest in the UK? I'd say at the moment, there's a lot of good deals to pick up inexpensively around the Nottingham, Leicester. You've heard of Leicester, the football team that won the Premier League a few years ago. Nottingham, Leicester, Birmingham, all kind of around that area is very, very good. Some friends of mine are going property hunting all the time and picking up some fantastic deals there. Things seem to be going really well for the property market in the UK, but if I were to ask you if you could point out, let's say, 3 main problems that the property market is facing right now, would you be able to point some out? Perhaps the uncertainty. When you say problems, there's always different ways of overcoming these problems. You've got to look for the answers. Perhaps the uncertainty, because we have an election on December the 12th, and we do hope that Boris Johnson gets in with a majority. Otherwise, there'll be turmoil again. But even if the wrong party gets in, that will give you buying opportunities because, you know, property is a medium to long-term investment. It's not just a short-term fix. So if you look on a medium, 3 to 5 to 10 years, I think there'll be right now and through to the beginning of next year, there'll be some good bargains to pick up. That's for sure. That's one. There are a lot of taxes for the smaller investor in this country that the government has put on a typical investment. That's a problem. You know, if you look in London, it is quite expensive to buy a property. You have to pay what's called stamp duty, plus an extra 3% stamp duty. So it can be very expensive. But further north, where smart investors are looking, 100, 150 miles north of London, there are some great areas with potential for capital growth. So if your investors are looking to come to England, there's some very, very good... Raj, in this reference, I have one quick question. If I want to buy something in UK, so how many taxes I have to pay? How many taxes? If you're a foreigner? Well, actually, you can buy in companies and not have to pay much tax at all. So you'll have to give me a call, Aamir, when you're coming over, and we can help you out on that. And what about the local? If local want to buy something in the UK, so how many taxes they have to pay? Well, say, for example, they're going to buy a house to rent out. They have to pay stamp duty plus an extra 3%. How much? So if it's $200... Sorry? How much in percentage? So the stamp duty will be 3% plus perhaps another 1%, about 4%. And then there are taxes on the rents. But otherwise, no, the UK is a very, very good place to invest. For the locals and the foreigners. I think one of the other markets that's very lucrative and that Pakistanis look forward to in investing is Dubai. आप किसी से भी बात करें तो अगर बाहर की प्रॉपर्टी की बात होती है तो या यूके की होती है या दुबई की होती है, and most of our people including the politicians उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर हैं भी. दुबई चलो हम बचपन से सुनते हुए आए थे और ये हकीकतन दुबई हमारा पैसा ले गया. दुबई हमारा पैसा ले गया और आमिर साहब आजकल ये बात भी होती है कि it's not as lucrative as it used to be दुबई में इन्वेस्ट करना. बट हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएई से. Assalamu alaikum. Rashid Al Aamir is with us. Welcome to the show.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Sundas, how are you? I'm all right. Thank you so much for joining us. The question that I would like to start with is that most Pakistanis think that Dubai is the next big thing to invest in, and if we invest today, we're going to make millions in a few years. But what we've recently heard is that the market is not doing so well in Dubai. How true is that, and what is the situation of the market over there? Well, see, I mean, a lot of rumors have been happening all over Dubai and all over the Gulf because people, they really don't know what exactly is happening. So if you take an article from, or the report from Dubai Land Department, we sold 4,774 transfers of the properties since 2018. This is the highest figure what we have sold from the crisis from 2008 to 2019. How So many of people, them? they are How many of buying them it. have been sold to Pakistanis? Well, I can't tell you exactly how many are sold, but now people are investing from China and Saudi Arabia because before the people used to buy the property and as an investment. So now the trend has been come to that people only who are end users, they are buying it. So most probably our market is booming because of the Chinese, because we already signed the one road, one silk, one road, whatever what you have with China. So we have the same project with them, which is happening in Jabal Ali, which is worth of I think 2 billion. So because of that, a lot of Chinese people, they are coming to Dubai and they are investing and they are buying it. The properties with well-known developers who can perform their construction by the period of the given time. So, before used to be like all the developers came from a different continent. I don't want to give the names of the continent, but people came from all over the world and they started to develop the properties, and some perform it 20%, 30%, and they have taken the money and they went back. So Yeah. So, now so there's. Hi, Rashid. Aamir here. yes, Sorry? Mr. Khan, how are you? I'm fine. Rashid, if I can believe on your comment, so why we heard that Dubai is sinking ship now? Where are the rumors coming Dubai from? Is what? what he's asking. Why the The sorry? Why the what? rumors is Sorry. coming from the people only. I mean, if you see the statistics of the land department, if you see the report from the national news, and if you see from the routers, the GDP, only 13.6% is the GDP in real estate, and we have 39.6% GDP, which is from the oil revenue. So the IMF already predicted that from 2019 to 2020, it will be increasing 3% and above, yani, because we are expecting Expo 2020, which we already have work on that, and the work is going on, and a lot of people are going to come all the world, yani. So we are expecting around 20 million people who will be coming, but I don't say that they will come and invest, but first they will see, and definitely because we have worked very hard, and we have created the infrastructure of the country, and we have security, we have all the things you need in developed country. And so There's ease of business and over there for sure, but have the taxes made a difference? Have the taxes gone up Sorry? considerably? I did not hear the question. Can you repeat again, I'm please? saying I agree with you on the fact that there is ease of doing business in Dubai and people look forward to it because there's a lot of security surrounding their investments. They feel safe when they invest over there. But have the taxes gone up considerably when it comes to the property market? Has there been a significant change in the taxes? No, I don't think so. The tax. See, I will tell you one thing. The tax which is implemented, 5%, it's a VAT. I mean, if you live in Europe or any other country of the world, you are paying more than 30% of your tax. So this is just on the nominal fees, what is being put on the goods, what you are buying it, 5%. And this 5% is just going for the infrastructure, and you get, I mean, all the facilities from the government. Like, for example, you have metro, you have roads, you have power, you have everything is available to you only one click from your mobile. So do you think, Rashid, this is affecting Dubai market? I'm saying, Let me people, they are get there. prepared
to invest. And they're already investing in Dubai. As I told you, 4,774 properties has been sold, and this is like. So basically what he's trying to say, there's no unfair taxes, and if you were investing anywhere else in the world, you'd be paying much more than what you pay in Dubai. And also he said it's all rumors. It's all rumors. आसान अल्फाज में हम अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे कि यूके से और यूएई से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा कि टैक्सेस देने से मार्केट के अंदर बेहतरी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो अल्टीमेटली उसके जो बेनिफिशियरी होते हैं उसके बायर होते हैं। और मेरे ख्याल में और ये भी बता दें कि दुबई में पाकिस्तान से काफी कम टैक्सेस हैं। यकीनी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम टैक्सेस देने की आदत डालेंगे तो अल्टीमेटली हम बेनिफिशियरी होंगे उसके। अच्छा, हम साथ में जो है एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ हैं कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुंदस, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती वक्त हमें देने का। हम ऑल अराउंड द ग्लोब का पर्सपेक्टिव जो है वो इस वक्त ले रहे हैं, तो आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि कनाडा में प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं। हमें पता है कि एक बूम था जब बहुत सारे पाकिस्तानीज़ ने जो है कनाडा में इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उधर भी कुछ डाउनफॉल जो है वो आया है, उसकी क्या वजूहात हैं, आप क्या कहेंगे? सुंदस, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं और पूरी दुनिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, उसमें कनाडा थोड़ा सा डिफरेंट वो उसके फैक्टर्स हैं जब हम कनाडा की मार्केट को देखते हैं। पिछले क्योंकि मैं पूरा कनाडा की मार्केट को यहाँ पे अभी कवर नहीं करूँगा, मैं ओंटारियो की जो उनका लार्जेस्ट प्रोविंस है उसकी मार्केट को डिस्कस करूँगा। और पिछले एक 10 साल में, एक डिकेड में 2007 से 2017 तक 119% की ग्रोथ है कनाडा की। ये जो GTA की मार्केट है, GTA के साथ फिर आपका लंदन आ जाता है, विंसर आ जाता है, वहाँ पे पिछले 10 साल में 62 से 63% की ग्रोथ है। उसके बाद फिर बर्लिंगटन का एरिया है वहाँ पे जो GTA के साथ ही अटैच है, वहाँ पे पिछले पूरे एक डिकेड में वहाँ पे जो ग्रोथ है वो तकरीबन 80% प्लस है। तो जब हम इस मार्केट को इसको देख रहे होते हैं तो इसके थोड़े से डायनेमिक डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पैराडाइज है इनकी, जो नए यहाँ पे लोग आते हैं और हर साल GTA अलोन में जो लोग या जो अभी ये डाटा शेयर कर रहे हैं वो 1 लाख लोग हर साल GTA जो ग्रेटर टोरंटो एरिया कहलाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग आते हैं, जो तकरीबन इक्वलेंट टू 30,000 फैमिलीज बन जाती हैं। इनको कॉन्डोज चाहिए, इनको घर चाहिए, इनको रेंटल प्रॉपर्टी। तो ये बहुत प्रॉपर्टी, ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं एहसान साहब, ये आप पाकिस्तान से सिर्फ कह रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहां पर आते हैं लोग? देखिए, जो सबसे ज्यादा लोग जो अभी कनाडा में आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं, एंड देन दे कम विद लॉट ऑफ मनी। दूसरे नंबर पे इंडियंस हैं और तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तानी हैं। अच्छा। तो ये इस तरह से जब इस मार्केट को हम देख रहे होते हैं तो ये मार्केट के डायनामिक इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई में हमेशा थोड़ा सा जो है ना, वो आप जितनी डिमांड है हाउसेस की हर साल वो आप उतनी सप्लाई नहीं आ रही होती। और दूसरा जो है वो नेचुरल ग्रोथ है। ऑफ कोर्स नेचुरल ग्रोथ में आपके यूनिवर्सिटी से बच्चे जो है वो पढ़ के निकल रहे होते हैं, उनको जॉब्स मिल रही होती हैं और वो भी अपने इंडिपेंडेंट घर जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, एहसान साहब मुझे बताएं कि कितना डिफरेंस है एक फॉरेनर के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करने में और एक लोकल के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करने में? क्या ये मतलब फॉरेनर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाहे कोई पाकिस्तान से? देखें, ये वन ऑफ द हाईली रेगुलेटेड मार्केट। एहसान साहब सॉरी, मैं एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, इसका जवाब मैं आपसे दूंगी। वेलकम बैक टू द शो। जी एहसान साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या वहाँ पर जो है, क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं और आप ओंटारियो की बात कर रहे हैं, तो इज़ इट एज फ्रेंडली फॉर द फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट एज इट इज़ फॉर द लोकल्स, और क्या मज़ीद करना पड़ता है जब फॉरेनर्स वहाँ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं कंपेयर टू द लोकल्स? सुंदस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि फॉरेनर आए या लोकल आए, जहाँ भी प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न। क्योंकि एहसान साहब एक मिसकंसेप्शन है ना कि बाहर के लोग, मतलब यहाँ से बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल है, मैं उस पर आता हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर लेने दें कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी आपको 10% या 12% या 15% आपको कैपिटल गेन दे रही होती है, तो ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी लुक्रेटिव मार्केट बन जाती है। ठीक। अब वहाँ पे
जो चैलेंजेस हैं जो, और ये हाउस मार्केट में नहीं, आप फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं कंडोज मार्केट में, जिसको हम हाई राइज बिल्डिंग या वर्टिकल कंस्ट्रक्शन या आप इसको फ्लैट या अपार्टमेंट हम यहाँ पे कहते हैं, तो उसमें आते हैं 1 साल के लिए। लेकिन फॉरेन के लिए इतनी, अगर वो कंडो मार्केट इतनी तेज़ी से जंप नहीं करती जितनी कि हाउसिंग मार्केट करती है, तो वो 4-5% अगर आप कर रही है तो वो इतनी वायबल इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर के लिए नहीं रहती। यहाँ पे आपको कनाडा में 13, जब भी आप कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप कंडोज अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आपको 13% HST देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे जब मॉर्गेज, क्योंकि यहाँ पे ग्रो करती रही है एवरेज 13-12-13% से मार्केट अप टिल। बिल्कुल। तो एहसान साहब, सॉरी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो आई वुड समराइज दिस एज कि इतना ज़्यादा मुश्किल या डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी भी कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इतना डिफरेंस नहीं होगा और इट्स रिलेटिवली ईजी। आई वुड लाइक टू आस्क राज अ क्वेश्चन। राज, आई वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस शुड एन इन्वेस्टर बी प्रिपेयर्ड फॉर इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर मार्केट? Do you know, I think it's very investor friendly in the UK, to be quite honest. The governance is very good. We have a strong land registry. It's foreigners can get mortgages very, very easily. They can buy in companies, and there's some great tax concessions for that, which is handy. So I think it's very, very good. And what you have to remember is why are you investing in property? The number one reason is to make money. And the number 2 reason is to make money. Okay, so the main reason is to make money. To get rich. In the UK, you can leverage your investment. You don't have to pay for it cash. There are many, many different mortgages and loans available to investors from abroad. And also, it's a matter of getting the right person to show you where to buy. On some of the properties in the UK, you can get very good discounts off list prices. But it's better to get a smaller discount off a good deal than a huge discount off a bad deal. And in parts of the country, the yields are very, very good. It's a very, very good place to put your money. I mean, I buy and sell a lot of properties. We have lots of different creative techniques in the UK of buying and selling properties, like flipping them to make money. Normally, someone would just buy a property, pay the taxes, pay the stamp duty, sell it, etc., etc. I take a lot of property on options. Raj, would you say the same about the more crowded places? For example, the places that are now more populated and the spaces are very small, but the taxes are really high, the property prices are really high. For example, London or Birmingham or Manchester, that's where most of the Pakistani population and the Indian population is based as well. Yeah, I mean, there's huge opportunities. The great thing about the UK is it's a very small country. The population is around about 66 million. The net immigration, according to Migrant Watch, is 250,000 people a year. So that's 5,000 people a week as relocating net to the UK. And we're only building 150,000 houses a year. So we're short by 2,000 houses a week that we're building for the net immigration. That's without the population here breeding and what have you. So the market is very strong. It's supply and demand. There's not enough houses in this country. Yeah. So you'll see continual growth and continual house prices in different areas. And it's a matter, sometimes you don't want to buy in the middle of Birmingham or the middle of Manchester. Yeah. Just on the outskirts is a place where Thank you so much, Rahat. I would say you're a great advocate for, I mean, you've convinced me to buy property. So I don't know what the real situation is, but you've advocated very well for your country. Thank you so much for being with us. It was lovely to have you. I'll move on to Dr. Chris. He's with us from Argentina. Hello and welcome to the show. Hey, hello, how are you? I'm good, Dr. Chris. How are you? I'd like to ask you about your property situation in Argentina. How is the recession affecting you? Is there a recession? Has the property market deteriorated or has it gotten better? How is it looking for foreign investments? Okay, I would like to talk about in general in Latin America because Argentina is not an exception regarding the Latin country. Because as we know, we are facing some challenges regarding the situation and the political situation in some countries, especially in Bolivia and Chile, Mexico, Colombia, and Argentina. But I still believe that Latin America has a lot of potential to invest because I think in terms of the future economy that we are going to have in the coming years,
we are going to have the potential to develop the new technology because we are having lithium in 3 countries, especially Bolivia, Argentina, and Chile, and at the same time Peru also has lithium. And lithium, as you know, is the black gold. So I think that the challenges that we are having right now are the political situation, the currency in the case of Argentina. But I still believe that there is a lot of potential in terms of offering services around the world through Latin America. And the population is young, so in my opinion, it's one of the most important issues that we have to consider if you want to invest in our continent. And at the same time, you have to take a look in different cities in Latin America. For example, Buenos Aires in Argentina, Bogotá in Colombia, Lima in Peru, Mexico, DF in Mexico, São Paulo in Brazil. Those cities are growing, and I think that in the coming years, for the troubles that we are going to have for the industrial revolution and the digital era, we're having too many opportunities for investment. Would you say it's a good time for investors to invest in your country? I think at the moment, because we had 2 weeks ago the election for presidency, and I think it's not the right time for investment in Latin Argentina because we have to wait at least for 6 months to see how it's going to show the new government the law and how it's going to be wide open or not for the investment. And I think that Argentina, for too many reasons, is a good country for investment. I think that we are having the most problematic issue is the currency and the inflation. But despite of that, natural resources and raw materials and lithium and among other things, I think for that reason, I think Argentina is going to have a good opportunity in the coming years for that. Yeah. But not right now. Thank you for your honesty, Dr. Chris. I would like to move on to Mr. Al-Amri, and I would like to ask you, what kind of future business prospects are there for foreigners in Dubai right now? Well, see, the future business prospects, is going on. Yeah, future business prospects are like, see, they can come and invest in the real estate and what the business are developing at the moment, because we are only focusing on the Expo 2020. So things are coming very good at the moment. And I think this is the future 2020 for investing in the real estate. That's all? Real estate is all there is to sell in UAE right now? Yeah, real estate, because the market price is now acceptable by everybody, because now the developers, they are giving to the end users for 8 years, 10 years payment plan. So you just pay 10%, 20%, and you can move in your apartment or house, and you can pay for a long term. So I think this is the best opportunity what all the developers are to the investors. And at the moment, the ROI for the from 6.2 to 12%, depending on the area and the locations of your property. Aamir साहब, अब ये क्या कुछ years के अंदर drop हुई है property market, because the way that he's saying it's only 10% and 20% is the best time to invest. तो ये पहले तो हमें लग रहा था कि शायद it's more expensive to invest over there, but has it dropped considerably? आमरी साहब के जितना भी तजज़िये हैं उनको सुन के मैं से हैरान हो रहा हूँ, Because it seems like we should be investing today. क्योंकि मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर छोड़ के आए हैं, जो सफ़र कर रहे हैं दुबई मार्केट से, यूएई मार्केट से, और शायद दुबई में काम करने के जो अंदाज थे वो तब्दील हो गए। एक ज़माना था इंडियन पाकिस्तानी मार्केट वहाँ पर बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्म कर रही थी, डोमिनेटेडली, लेकिन अब वहाँ की जो मार्केट है वो उन्होंने लोकल्स ने अपने हाथ में ले लिए। जितने बड़े ब्रांड हैं, whenever they want to market something, वो आते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट करते हैं और मार्केट से पैसा निकालते हैं, लेके चले जाते हैं। जो इंडियन पाकिस्तानी जो छोटे डेवलपर्स थे वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, अपनी जमा पूंजी जो वहाँ लेके गए थे वो वहाँ पर तबाहाल होके वहाँ से निकल रहे हैं। वो लेकिन क्या सिर्फ रियल, जिस तरह इन्होंने कहा कि रियल एस्टेट इज द मोस्ट लुक्रेटिव, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं, तो आपको लगता है कि सिर्फ रियल एस्टेट में पाकिस्तानी, बिकॉज देयर मेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एंड देन एक मिसकंसेप्शन है जो हम यहाँ पे अगर क्लियर कर दें कि दुबई में या यूएई के अंदर आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते,
یہ یو ہیو ٹو ہیو اے لوکل پرسن ود یو یا لوکل انویسٹمنٹ بزنس کیا اس میں؟ ایسا نہیں ہے. فری ہولڈ کے اندر وین ایور یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ یو کین. آپ فری ہولڈ کے اندر کمپلیٹلی سوللی آپ آنر ہوں گے. یو کین اویل آل آنرشپ رائٹ جو کہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا بھی ابھی ہمارا پروگرام گیا ہے اس وقت ہم نے مجموعی طور پہ 4-5 جگہوں سے لوگوں کو لیا ہے. ہمارے پاس 30 سے زیادہ مختلف علاقوں سے کنٹریز سے لوگ ہیں جن کو کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آن ایئر لے کے آئیں, اور ان کے ساتھ ہماری جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے. مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ ہر جگہ آتا ہے, کہیں پر زیادہ کہیں پر کم. جیسے ابھی ڈاکٹر کرس نے کہا کہ مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ارجنٹائن کے اندر لاطین امریکہ کے اندر انویسٹ کیا جا سکے, لیکن وہیں پر راج نے کہا کہ یو کے اندر دس از رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. لیکن سر انہوں نے بھی 2 باتیں کی نا. انہوں نے کہا انسرٹینٹی کو ایک کون بھی کہا ہے, انہوں نے پرو بھی کہا ہے. انہوں نے کہا انویسٹ بھی اس لیے کریں کیونکہ انسرٹینٹی ہے, اور نہ بھی اگر کریں تو اس لیے کریں کہ انسرٹینٹی. کیا ہے کہ وہاں پر ایک فیز آتا ہے 6 مہینے کا, سال کا, جس نے راج نے کہا کہ الیکشن تک جو ہے یو ہیو ٹو کیئرفل. اسی طرح مختلف مارکیٹ میں ہوتا ہے 6 مہینے. ابھی اس نے ڈاکٹر کرس نے کہا 6 مہینے کا. ہم پاکستان کے اندر جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کب اچھی ہوگی. بھائی اس لیے اچھی نہیں ہو, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مارکیٹ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. آپ ایک گرے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہو. یو ہیو ٹو اسٹرکچر یور مارکیٹ. یو ہیو ٹو آپ اپنے پیپرز کو, اپنے ڈاکومنٹ کو اسٹرانگ کریں, اپنی مارکیٹ کو جو ہے ساؤنڈ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی نادان ہیں, جتنے بھی ناسمجھ ہیں, اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاور ہب کے اندر موجود لوگ ہیں, وہ لوگ جو اقتدار کے اندر موجود ہیں, ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ڈرائیں نہیں کہ FATF کی وجہ سے یہ چیزیں اسٹرکچر ہو رہی ہیں یا فلاں وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان کو بتائیں کہ اس کو اسٹرکچر کرنے کے اندر ان کا مفاد ہے. میں یہ احسان صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانیز ہیں جو وہاں پر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, جو کینیڈا میں اس وقت رہ رہے ہیں, کیا وہ اس وقت جس طرح بدلتے حالات ہیں ملک کے, یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چیزیں مزید اسٹرکچر کی جائیں گی, ان کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شاید واپس پاکستان آنا چاہیں, یا وہاں پر جو جمع پونجی ہے وہ پاکستان میں لگانا چاہیں, یا وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان میں کچھ انویسٹ کیا تو وہ ڈوب جائے گا؟ اچھا سندس, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے, جیسے آپ دبئی آپ گئے, آپ نے جب وہاں پہ جا کے تو پراپرٹی خرید لی. وہاں پہ آپ کو پہلا بیریئر جو کراس کرنا ہے وہ $800,000 کا ہے. اگر آپ امیگرینٹ بننا چاہتے ہیں کینیڈا کے اور آپ کو انویسٹر ویزا چاہیے تو اس کے لیے پہلا بیریئر ہے $800,000 یو ہیو ٹو انویسٹ ان دیٹ کنٹری, اور اس کے بعد پھر آپ جائیں. احسان بھائی پاکستانی ویلیو میں کتنی رقم بنتی ہے؟ میرا خیال ہے آج کینیڈین ڈالر کتنا ہے, 120-130 کا ہوگا آلموسٹ. تو بالکل. سر احسان صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, اور انیل کپور صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. Anil, can you hear me? I think he can't hear me right now. Ehsan sir, please آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی احسان صاحب آپ جو بات کر رہے تھے پلیز اپنی کنٹینیو کیجیے گا کہ کیا وہاں سے لوگ یہاں پر آ کے انویسٹ واپس پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, یا وہ جو سچویشن ہے اکانومی کی اس سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انویسٹ کریں؟ میں اگر کہوں کہ لوگ دیکھیں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ جو بھی آپ کو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی انگلینڈ میں یا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی بھی کہیں بھی پاکستانی کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہر ایک پاکستانی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی گھر ہو پاکستان میں. بالکل. اور وہ اچھی لوکیلٹی میں ہو, اچھی جگہ پہ ہو. لیکن لوگ ڈرتے کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ کچھ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. یہاں پہ اگر وہ کئی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیتے ہیں, 10-10 سال 12-12 سال ان کو پوزیشن نہیں ملتی. بالکل. اس کے بعد اگر ان کو کہیں کبھی کو پوزیشن مل بھی جائے تو یہ بہت سارے پرابلمز ہیں ان کے لیے جن کو ایڈریس کرنا میرا نہیں خیال کہ ابھی اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کینیڈا کی بات, لیکن آر دے مور ولنگ, مطلب میں تو لوگوں کا پرسپیکٹو جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح عامر صاحب نے شروع میں کہا کہ لوگ ولنگ ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی جو ہے اس کو اسٹرکچر کیا جائے. نہیں دیکھیں, وہ میں جب شروع میں نے کہا تھا تو یہ 10th لارجسٹ اکانومی ہے کینیڈا کی, اور یہ ہائیلی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے. وہاں پہ اتنا ٹرسٹ ہے. اگر آپ کو میں تھوڑا سا, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو ٹائم ہمارا بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں تو تھینک یو جو ہے کہنا چاہوں گی اپنے سارے جتنے بھی ہمارے آج گیسٹ ہیں, ساملا صاحب, راج سنکلیر, راشد العامری اینڈ ڈاکٹر کرس, یو ور ود اس ان دی شو. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. صاحب آپ سے میں کلوزنگ ریمارکس لوں گی, آج کے پروگرام کا کرکس اگر آپ بتائیں.
पाकिस्तान मार्केट को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इस वक्त प्रॉपर्टी मिल रहा है सिर्फ उस बुनियाद पे कि उनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। हमारे पास जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि अगर हुकूमत उनसे आके कहती है कि टैक्स दो, अपने तमाम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, तो ये समझना होगा कि ये उनके मुफाद के अंदर है। अगर ऐसी कोई भी मूव हो रही है तो इससे अल्टीमेटली फायदा होगा। उसके बीच में हर्डल ना बने। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले संडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।